बेंगलुरु में महिला की हत्या कर शव के 30 टुकड़े कर फ्रिज में रखने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मृतका का नाम महालक्ष्मी है। हत्या के मामले में महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हेमंत का कहना है कि हत्या के पीछे महालक्ष्मी के प्रेमी का हाथ हो सकता है। महालक्ष्मी का 30 टुकड़ों में कटा शव बेंगलुरु स्थित उसके फ्लैट से मिला था। महालक्ष्मी के पति हेमंत ने पुलिस को बताया है कि उसने अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ कुछ महीने पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्यारे की तलाश की जा रही है। As far as Vayalika or murder case investigation is concerned, we are investigating the case from all angles, and more or less the culprit who is or the prime suspect who is likely to have committed this nasty offence is identified. The only thing is we are yet to apprehend him, in the sense we have not yet caught him. So as and when the person is caught and further his interrogation is done, then we will be able to provide further details regarding the case. I already told that the crime suspect has already been identified. We have to physically arrest him. Only then we will know further details. At this stage, if I tell anything, it will be to the benefit of the accused, not to the public. So I will refrain from giving any further details. But he is from Bangalore. Is he from Bangalore or outside? He is an outsider. ब्यूरो रिपोर्ट टीम द सारा टाइम्स न्यूज।